India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally India in the wake of
𝗬𝗏 ने फिर ऑर्डर दिया देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भी इन्होंने किया था, वो पकड़ लो किसी को। इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी बाढ़ के ऊपर जाके मारते जी, they were innocent boys. Are you listening? After a quarter of a century, it's the same playbook being repeated again and again. Using incidents like 𝗖𝗏𝗃, like Pulwama for political objectives. If you see, the history also tells us what was actually Pulwama. Please listen carefully to the then governor of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ लाना तो चुप रही है। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि blame Pakistan Exactly. and we will get credit and it will help our election. Exactly. Blame Pakistan to win, to take credit, win elections. Now, there is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used in fake encounters projected as terrorists and infiltrators. I'll give you just few examples. This boy, 𝗤𝗏𝗽𝗥, he was a minor in October 2013. He was taken in custody while he inadvertently crossed, shot down in a fake encounter on 14th October 2021. Listen to this story as told by his family. ये जो इंडिया वाले हैं, मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना। इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते। इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको इनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी। पाला भी था, वो मेरे घर में भी नीचे आता था, मामी मामी करता था, इधर ही बाहर ही खेलता था। माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे, उनकी आंख नजर भी चली गई थी रो रो के। तो बस जब कोई इधर कोई आता था उनको मिलने के लिए कहते ज़िया-मुस्तफा की कोई खबर है, नहीं है। हम यही कहते थे कि वो आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। कहती थी कि मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं है। मेरी वालिदा मोहतरमा उसके इंतजार में वो वफात पा गई और इसी तरह से हमारे बड़े भाई, 2 बड़े भाई फौत हुए
उसकी इंतजार में हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया, जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था, उसको क्या पता था जालिमो तुम्हारे वो जेल में है, जेल से कैसे कोई बंदा राब्ता कर सकता है। I will now give you two very recent examples post Pahalgam incident. If you see this slide, there you can see two unfortunate Kashmiri. One is Mohammad Farooq and Mohammad Deen. They are both elderly. They were both elderly 50 years ago, 50 years plus. Just few days ago on 24th April, in their residence of Uri, and they were killed in a fake encounter by the Indians. If you see the dead bodies, that Indians showed that they are infiltrators. The Mohammad Farooq, he is wearing joggers. His clothes are absolutely clean. And what they have put beside, after killing him, beside him, is a pistol. Is this the infiltrator where there is infested with regular forces going to take on a regular army, and those security forces wearing joggers and a pistol that they planted along with his body? On the other side, look at the shoes. He's wearing Mukeshan, shining shoes. You kill innocent, you plant evidence on them, and then you call them infiltrators? And what are these village people telling? That are they terrorists? Are they infiltrators? Listen to them. हमारा असमिया हो गया है, ये दो हमारे भाई ये सदियों से जा रहे हैं, इनका बाप है वो यहाँ का रहने वाला है, जो आलूसी के करीब ये गाँव है, कहीं मालिक बेशी गुम हो जाता है, आलूसी के करीब उनको ढूंढने के लिए ये इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए, वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्द के नहीं है। हमारे दो भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ उम्र थे, उधर उनकी 50-60 साल उम्र थी, और उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ईफ़ उम्र थे। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम नदीम मिर्दार। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं। इंडियन आर्मी ने फायर करके उनको हलाक कर दिया। मेरे दो भाई अपना माल मवेशी ढूंढने के लिए एलओसी लाइन के करीब गए तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया। This is what they are trying to fabricate even after post-Pahalgam, that the Pakistan is sending infiltrators and terrorists. You kill innocent people yourself. You plant weapons, and then you claim them as infiltrators. You claim them that the Pakistani security forces have sent them. Ask yourself that who is doing state-sponsored terrorism over here. Next example. This is 23rd April, just few days ago, a fake encounter that happened in Kupwara. Please hold your breath and see what they do once they are planting, once they are making their bodies, how they mutilate those bodies. Listen to this. These are soldiers of a professional army, hacking the head of a body of an innocent person and showing that these are the terrorists. This happened on 23rd of April in Kupwara. And that's why, if you go to the next slide, once you keep on seeing on the Indian media and the so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens, who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters, tortured, forced to give confessional statements, posed as terrorists. This is the facts, this is the reality of what's going on behind all these incidents.
Next, I would like to say few words and take a few minutes on the state-sponsored, the Indian-sponsored and abetted terrorism in Pakistan. Let's start with what the Indians themselves say about it. Please listen. बलूचिस्तान के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उसका आदर करते हैं, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का है. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. प्रधानमंत्री जी का लाल किले से बयान अपने आप में पहला है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बयान को सुनकर. इस फोन में गुप्ती, मरी, मैंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलूचिस्तान में. अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं, Former Chief of Indian Army talking. हमें वो करना चाहिए. उन्होंने बलूची को दबा के और गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना है. The aims and the targets of various terrorist 𝗂𝗏𝗀𝗣𝗥, all of you are familiar with this Indian serving officer. and any kinds of requirements of them are conveyed back to the raw officials. बैरून मुमालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश वशरत की जिंदगी गुजार रहे थे. आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं. इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है. मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क हुआ. हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए. एक महसूस ताकत बलोच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ बलूच कौम का हो रहा है. दुनिया की नजरें तो हैं इस पे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता. So these were the leaders of multiple terrorist groups operating in Balochistan, who, having after surrendered, are revealing in detail that how they were funded, they were helped, and how their sponsorship was done by India. In the next slide, you can see a terrorist operating and sponsored by India, Aslam Machu, in Indian hospital, and an Indian provided passport of Afghanistan office. In next slide, you can see that once the Jafar Express happened, the internationally recognized terrorist organization 𝗣𝗏𝗽𝗥, his spokesperson, where was he sitting? He was sitting on Indian channels, wearing a mask, coming on multiple Indian channels, and glorification of a terrorist sect, which, by the way, the state of India has not shown any concern or condemned so far. And they are glorifying it, taking its spokesperson over here. बहुत बड़े पैमाने का एक ऑपरेशन है, सैकड़ों यरगमाली है, फिर उसमें फौजी भी है. बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड इसको लीड कर रही है. उसके जो खासूसी दस्ते हैं स्पेशल. This is again very interesting. This footage that the Indian TV channels showed was made by the terrorists once the Jafar Express ID was blown. So this was only available with terrorists. And who are the first electronic channels who started showing it? It's the Indian channels. See it. The attack took place at around 1 p.m. when the train passed through the Bolan Pass. Big news coming in from Pakistan's Baloch army say that more than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. It's a big claim being made by the BLA. 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. Artificial intelligence images being created. The Pakistani train was hit by old images which are not related to the incident being used to show that terror incident has been. So this is vehement, clear glorification of terrorism being done in Pakistan. If you move to the next slide, you will find that not long ago, it was Pakistan
has repeatedly has been telling this. And this is the evidence that Pakistan put in front in this room on Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan once the transnational killings of Pakistanis was done. Listen to this clip also. We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. An Indian agent, 𝗖𝗦𝗣𝗥, orchestrated the assassination. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. And is it only restricted to Pakistan? No, it's not. It's transnational. Listen to what the other parts and the leaders of the other countries are saying. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, 𝗗𝗄𝗽𝗂𝗃 𝗵𝗎𝗃. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself. So once we say that we have got nothing to do with Pahalgam, and once we say the only way out is an independent, credible, transparent investigation, we have strong reasons, empirical evidence and facts on the basis of which we are saying. Now, see, if you come to the next slide, if you remember that once the National Security Council issued its declaration on 24th April, it clearly said that Indian attempts to inject volatility in the environment along Pakistan's eastern border is aimed at distracting Pakistan's counter-terrorism efforts. And on night 25th, 26th, within 48 to 72 hours, its manifestation was clear. The largest tashkeel of 𝗖𝗏𝗃𝗀𝗃 terrorists was taken down. 71 were sent to hell. This proxy of the Indians, the largest tashkeel, was launched, and alhamdulillah, the Pakistan security forces and the intelligence agencies, being vigilant, took them down. Because we have credible intelligence that Indians, post-Pahalgam, have tasked all their proxies to undertake terrorist acts everywhere in Pakistan. Whether these proxies are operating in Balochistan and along the other parts of Pakistan. One of the clear evidence of these proxies and these cells I presented in detail yesterday. Just to refresh your minds, I am going to request you to listen to just one audio of a serving major of the Indian Army talking with a terrorist who he is handling inside Pakistan. Please listen to this. बात आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट अब तक से तो हम लोग भी नहीं है जी, और पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना? ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना? तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन डेटिंग लेंगे। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना? जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप
लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपने रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्लाइंट तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है। मेहनताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई, उसकी भी तो लेबर लग रही है। मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ। अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ, अभी किसी बंदे। So what all we are showing you here, that independent, transparent, neutral, credible investigators, if they see this, this is what they need to see. This all is verifiable. This all is there for to see. It can be forensically checked that there is this serving Indian major. And this is few days ago. And if you listen carefully, what is he saying? He is saying we are operating a terror network from Lahore to Balochistan. He is saying we are here for years and we are going to be here for years. He is saying money is no problem. If this small terror cell, that one man cell, he is offering him millions and giving him millions. Just imagine how many billions are they ready and are they paying to Fitna al-Khawarij and the terrorist organizations operating in Balochistan as their proxy. Just imagine that how much money is being paid over there. And is it not a clear, vivid example of what actually terror financing means? This is for the world to see. This is for the world to check. Against all this terrorism that is sponsored and abetted by the Indians in Pakistan, because of it, if you go to the next slide, you will see the figures. Since January 24, Pakistan has suffered 3,700 terror incidents. And you talk to us about your incidents that are happening without any evidence, and you put those incidents blame on Pakistan. There is verifiable evidence that there are 3,700 incidents of terror that are happening over here. We have shown you a few parts of that how is it happening, who is sponsoring them, who is glorifying them, who is abetting them. In these incidents, the people of Pakistan has suffered 3,896 casualties. There are 1,314 shaheeds, civilians, law enforcement. There are 2,582 injured. And against this, your law enforcement, your security forces, intelligence, armed forces are waging 192 operations per day. We have killed more 1,666 terrorists. This is the terrorism that has been abetted and sponsored by India. It's for the whole world to see, they feel it, its effects. And here we must be cognizant that Pakistan is the last bulwark that is standing against this scourge of terrorism, of this creeping, perverted ideology, which is getting its notion of victory somewhere else. And it's the Pakistan, the people of Pakistan, its armed forces, its law enforcement, which is standing as the last bulwark, not only for the sake of Pakistan and its people, but for the
sake of the whole global, what sort of disaster consequences it will have for the whole world. And India, for its short-term myopic objectives, is facilitating this terrorism. It's abetting this perverted, creeping ideology. Why? For its short-term political objectives. So this is important to understand. Now, a few words about the oppression that is going on with the Muslims and in Kashmiris. We're not going to talk about what's been happening for last more than 70 years. I'm just going to show you what's happening since Pahalgam. Please watch this. That how the houses, please run this. That how the houses are being bulldozed, blasted. There are more than 50 houses in Kashmir alone have been bulldozed and blasted on flimsy charges of being affiliated or being part of the Pahalgam. More than 2,000 people have been taken into custody. Thousands are being harassed. This is what's happening right now. Get out. I'll request you to go to the next slide. Now, I talked earlier that there is a planned and choreographed campaign of Islamist terrorism, but the facts speak differently. This is what some sane people are saying, that the tourists who came in taxis belonging to Muslims, they stayed in hotels owned by Muslims, they ate food cooked by Muslims, they rode ponies owned by Muslims, they did trekking guided by Muslims. When terrorists started their attack, they were covered and protected by Muslims. The first person to die defending was a Muslim, and you heard his brother. Did you not hear his brother? The first person who died protecting those tourists? You kindly next slide pe rahe. And বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল আর 6 বছর আগতে পুলওয়ামাত যেদিনা 300 কেজি আরডিএক্সের বিস্ফোরণত প্রায় 42 জন ভারত. So I'm trying to make you understand that what these saner people over there, they are saying they were the first who came to help for Muslims, the pony owners, the riders, the pillowback riders. First aid and rescue was done by Muslims. Ambulances were driven by Muslims. They were treated in hospitals by Muslim doctors and nurses. And everywhere on social media, we see that all Muslims are terrorists. So this is the orchestrated narrative that is being played. Now see this Muslim MLA from Bihar. Please now run this. Who raised his voice against this Muslim discrimination. বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল আর 6 বছর আগতে পুলওয়ামাত যেদিনা 300 কেজি আরডিএক্সের বিস্ফোরণত প্রায় 42 জন ভারতৰ সিআরপিএফ জোৱান নিহত হৈছিল। সেইদিনাই মই কৈছিলো যে ইয়াত চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত এটা সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন কৰি 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰত পুলৱামা বিস্ফোৰণ হৈছিল। আৰু সেইদিনাই মই কৈছিলো আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছিলো। Aminul Islam, MLA of the All India United Democratic Front, has been arrested by the Assam Police Crime Branch after his highly controversial and also offensive remarks alleging the involvement of the centre in the recent attack
on tourists in Pahalgam. In fact, he also called 𝗬𝗏𝗣𝗥 a conspiracy by the Indian government. So if you speak otherwise, go to jail, even if you are an MLA. And what's happening to the Muslims and Kashmiris? Please run this. हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गांव में। भाई हम काट लग रहे हैं, दो पकड़े गए, दोनों बार काट लग रहा है मेरा भाई। भाई बचा रहे भाई। दो कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू। Just see dogs and Muslims not allowed. Where did you see this? राय मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, पहचान करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं करा रहे हैं, हम तो मंदिर पे तुम्हें इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। And I just said earlier also that terrorism has no religion. There are no Muslim terrorists, there are no Christian terrorists, there are no even Hindu terrorists. So why an effort is being made to label the whole community, the Muslims, as terrorists? Is this part of some agenda? Is this part of that hate that systematically is being put in a society? That saffronization that is trying to be done, whose manifestation you saw that the Muslims and dogs not allowed? And where did we see that the world conscious and the world memory remembers those posters? And also that what ensued after that, the genocide and the suffering that ensued after that. So the irrationality that you see playing and the rational minds grapple to understand, it stems from somewhere perhaps over here. Lastly, those who are trying to tell within the India that there is something wrong, that something is amiss, what's happening there? Please listen to this. This is 24th April, a Kashmiri journalist. पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या जग मार रहे थे? फिर गवर्नमेंट क्या कर रही? मैं उससे सवाल कर रहा हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर? होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये क्यों हुआ? And what happened next day to this gentleman, this journalist? He is being forced in and nobody knows where he is now. Now see in next last clip that what's happening once you say your and put your voices on social media. अपहरण कांड 1999, social media influencer. 1999, संसद पर आतंकी हमला 2001, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017, गोधरा कांड 2002, पठानकोट आतंकी हमला 2016, उरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा आतंकी हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला 2025। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर, लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। So she is just pointing out common facts that all these incidents are happening in once the BJP government is in power.
She's trying to just connect the dots, and there you go, and the big law, hand of the law comes. And what they are trying to do for the voices that are coming from outside the world, if you go to the next slide, what's happening outside? They have blocked all digital YouTube, digital news channels of Pakistan, so that the voice of Pakistan of fact and reason, explaining what's happening, what are the actual facts, doesn't go to its citizens. They are blocking all websites, X handles, other handles who are talking about facts. This is what's right now happening on hourly basis. Why they are stifling it? Because they are afraid of truth. They don't want to face the reality. Lastly, I would just say that this tells us something very important. That what the Indians are trying to do is that there is a process of internalization of their external problems and externalization of their internal problems. Kashmir is an external problem, and they are internalizing it. Terrorism, extremism is an internal problem of India. Instead of handling it, instead of addressing it, they are externalizing it. This cycle is manifesting itself also in this Pahalgam incident. Thank you very much. We'll open the floor for questions. You moderate, Professor, with your permission. Yes, please. The floor is open. Ms. Mona. Mona Han from Independent Urdu. My question is from DJI SPR. Sir, what response and options are available to Pakistan in wake of your yesterday press briefing? Please. We are monitoring the situation very carefully in all domains. And accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. I'll just add to what Lieutenant General Sharif said, that Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. Thank you. Aga Ikrar sir. Sir, my question, thank you so much, Aga Ikrar from DND News Agency. My question is to DGI SPR. Sir, yesterday and even today, you have with the facts and figures and with audios, you shared how Indian Army, not the intelligence agency, the Indian Army is involved in cross-border terrorism in Pakistan. What next now? For how long Pakistan would face this situation when the Indian Army is directly involved, paying people with the documentation? You have shared everything. So what would be next now? Well, the nation is united. The resolve of the leadership is in front of you. National Security Committee press release, we covered every point. We discussed in totality. And I must compliment all political parties who represent in the Federation, federating units, all federating units in the Senate of Pakistan, which is a symbol of federation. There is the unanimous resolution, including, ma'am, repeating all political parties. And I think the message was loud and clear that in terms of our sovereignty or territorial integrity, there is no compromise. And we are one, united, and with clear resolve
that if any provocation takes place, then, don't blame us. And this is the message we have given while, communicating with world leaders in the last few days. Thank you. And Ms. Sumera, just to add with reference to the evidence that you talked, this evidence is credible, it is verifiable for any transparent, independent inquiry by any investigators. And Pakistan will take up this case, is taking up and will continue to take up this case of this state-sponsored and abetted terrorism with all forums, including the international community. Thank you very much, spokesperson. This is Sumaira Khan from Sama Television. Sir, I have a two-pronged question. One is from the respected DG and the other is posing at Deputy Prime Minister and Foreign Minister. DG, if we talk about kinetic measures, we are right now engaged significantly eastern border and western border as well. So the terrorist might be thinking, terrorist who's operating right now significantly from across the border, if you talk about Afghanistan, I'm forced to name this country as well right now. So what is our situation? Are we stretching our army at two borders? What's our strategy to deal with this two-prong kinetic strategy? And Foreign Minister, I'm seeing you discussing the entire situation with a lot of world leaders, and you have been day in, day out, you are speaking to them. But to my shock and wonder, I did not see any statement from any country that is condemning that India is not presenting substantial evidence of Pahalgam attack. And yes, they are offering their condolences to the victims, we do. But where is the demand for evidence from India, and what forums exactly we are seeking to put up this question? And as DG has highlighted, that state-sponsored terrorism from India, what exactly we are going to do about it? Thank you so much. I'll answer the second half. Pakistan Army and Pakistan Armed Forces and law enforcement, we are a battle-hardened army. So, it may be a ploy, it may be a tactic, it may be a desire, a strategy for them to engage militarily on the eastern front so as to create space along the western border. But Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. And its manifestation you just have seen in the last few days. As I told you that we have credible intelligence and that all the proxies of terror have been activated. But the security of the people is being done. The terrorists are being hunted and being taken down. So we are vigilant, we are watching everywhere. And I said earlier that we are watching their moves and what they are doing and their plans in all domains. So whether they are in the domain of counter-terrorism, non-kinetic, information operations, other domains, air, ground, sea, everywhere, and appropriate countermeasures are being taken, are in place. And there will be defeating and decisive responses. The second question, you see the reaction of the diplomatic world is always incident specific. The incident is Pahalgam. So that would be out of context what you expect, that while they are not condemning India, obviously they are condemning the terrorism, everybody, but I don't know whether you have seen the Chinese statement, whether you have seen the 𝗖𝗦𝗣𝗥𝗀𝗀𝗀, the president of Turkey statement, and I explained earlier that most of the global leaders, they were very, very candid and requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. So the policy of the government is absolutely clear, and that's what we are following. So surely this will be inappropriate, I think, at this stage. They haven't seen all this evidence, number one. The discussion right now is focused on an incident. So, it will be out of context if somebody goes out of the way and starts condemning why you're not dealing with all these things. So this is for your education to sharing
with the media, with the nation, with the international community, that's what Jan Saab and spokesperson have tried to just run you through. Thank you. Khalid sir. खालिद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, एक टेक्निकल सा सवाल है कि जो दोनों मुमालिक के दरमियान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो कंपैरिजन है, पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ खड़ा है? और दूसरा मेरा सवाल है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इंडियन मीडिया जो है वो अभी से जो लास्ट ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है। क्या ऐसा कोई मुमकिन है या ऐसा कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी वो लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है? Let me, before General Saab adds on, as for the warfare comparison is concerned, I think the conventional warfare comparison is over on 28th of May 1998. You are a nuclear power and so is India. Again, at that time, we were not the first one. They, exploded 5 devices. There was a lot of, offers from the world leaders, including President Clinton and many others. And Pakistan leadership, Mr. Mohammad Nawaz Sharif was the Prime Minister of Pakistan. We accompanied on 28th of May in NDC, where General Jahangir Kamal gave a briefing. What you asked, comparative warfare. So the decision was we have to go and respond to represent the sentiments of the nation as well. So, number one, so you are a nuclear power and you are recognized as a missile power as well. So, no worries at all. Warfare is very much there, but when you say last option, if you are referring to the nuclear option, so obviously there is a national command authority in place in Pakistan, like all the countries who are nuclear, and it is their domain that in such eventuality that national command authority would meet, where again Prime Minister and the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, the both the civil and military leadership who are the members of that command authority under the law of the land, they will sit and decide. Ji, ma'am, want to add something? Yeah. On these particular domains that in which the comparison, I think this is not the forum to discuss that in cyber domain, electronic warfare domain, in the firepower domain, in the information domain, in the other domains, we start doing a comparison of 2-3 countries and pause at this time. I think this is not the forum right now. I gave you an overarching response that we are watching them very carefully in all the domains and all the appropriate measures are in place. The response, as the Honorable Deputy Prime Minister said, will be befitting, it will be decisive and assured. नौरीन सुनो न्यूज़ से मेरे इसहाक डार साहब से 2 क्वेश्चंस हैं सर। पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की जानिब से ब्रीफिंग में बड़े वाज़े शवाहिद पेश किए गए जो ये साबित करते हैं कि किस तरह से इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस है। तो क्या पाकिस्तान मुख्तलिफ सफारतकारों को बुलाकर और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कोई डोजियर देने की तैयारी कर रहा है? और सेकेंडली ये सर कि क्या अभी तक अमेरिका, चीन या किसी भी दोस्त मुल्क की जानिब से दोनों मुमालिक के दरमियान तनाव की जो हालिया कैफियत है इसको कम करने के लिए कोई पेशकश की गई है? थैंक यू। देखिए, जहाँ तक डोजेस का सवाल है, as I said that we are actively involved with the diplomatic community. They were given briefing in Mofa by the Foreign Secretary to begin with, who were present in Islamabad. We are actively engaged with different high commissioners, ambassadors, chargé d'affaires. Even today, US chargé d'affaires called on me. So we are actively engaged on this thing 24/7. Number 2, the वाज़े शवाहिद जो आपने बात की देखें, let me remind you, all this thing what you have seen, if I can quote Madeleine Albright book, the introductory remarks were by President Clinton. Now, what did he say? And it's not a recent episode, it's decades old. In that book, it is written that quoting President Clinton, he said he had the intel information that if he goes to India, there will be around 36 will be killed, murdered. And so he responded that if I had gone, I had taken that information and not gone, then perhaps these 6 could have survived. But if I had not gone, I would not have discharged my responsibility as PUTUS, President of the United States of America. So it's not me who's saying, it's Madeleine Albright book.
The person she is quoting has written the introductory remarks in the book. So this is, you see, and the actions are totally, unacceptable. Even in 1971 war, Indus Water Treaty was kept in place and was followed. Never before, since this 23rd announcement, never before. And there is no provision or possibility in the international legal dictionary the word abeyance in any treaty. So they can suspend it, but there is no provision of suspension. Thank you. Mateen sir. जी थैंक यू सो मच डीजी मतीन हैदर डीजी ISPR से सवाल है। आज हमें आपकी तरफ से अपडेट्स मुसलसल मिल रहे हैं और एक अपडेट ये है कि पाक फ़ौज ने अपनी जो रेगुलर मशकें वो शुरू कर दी है। एयरफोर्स ने ऑलरेडी शुरू की हुई है। रात के हमें वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला जिसमें ये कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम है। आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना है कि कितना बड़ा ख़तरा है, हमारी कौन सी जगहें पाकिस्तान में, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, आज़ाद कश्मीर, भावलपुर, किन जगहों पे ख़तरा ज़्यादा है और उस ख़तरे से निपटने के लिए हमारी तैयारी उन इलाकों में कितनी है। चूँकि एक्सरसाइज का क्लिप हमें आ चुका है। और डिप्टी PM FM से सवाल है, हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ न्यू दिल्ली से आ रहा था उनके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत बदसलूकी की जा रही है। एक नोट भी हमें फॉरेन ऑफिस के ग्रुप में इस हवाले से मिला। तो ये बताइए, ये भी इंटरनेशनल लॉ वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है जो डिप्लोमेटिक स्टाफ आ रहा है। हमने उनके स्टाफ को बड़े एहतराम से भिजवाया लेकिन हमारे स्टाफ के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो बस ये 2 सवाल हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कर रही है ये, मैंने जो स्पोक्स पर्सन है उनको क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही मिनिस्ट्री। मेरा ख्याल 3 हो गया, फिर आप नया सवाल कर लें। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन, सो वी थॉट दैट इट वुड बी अप्रोप्रिएट लेट नाइट it should made public, and that's why the information minister gave the statement. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Number 2, बदसलूकी जहाँ तक आपने फरमाया, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe that respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they are moving to and from, we will take care of this. जहाँ तक पाकिस्तान के पंचों के ताल्लुक है, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously, since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with the more detail. Exactly. आपने एक एक्सरसाइज का रेफर किया. This is just one part that was shared with you. Rest assured कि आपकी चाहे फौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है. So we are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. जी, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं JNN से हूँ. डॉक्टर साहब, एक तो आपसे सवाल है और जनरल साहब आपसे सवाल है. जनरल साहब से पहले पूछ लेते हैं कि एक तो ये जो एक्सरसाइज का मतीन ने तस्करा किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोज भी आ जाती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतनी मोर्चे गिरा दिए, इतने जहाज़ गिरा दिए. हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक इस हवाले से भी आप बता सकें कि एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर क्या सूरत हाल है. फिर इंडियन मीडिया बहुत बुलंद बांग दावे करता है कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए हैं, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ नहीं है. तो हमारे पास तोड़ क्या है उसका?
और डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि आज ही अमेरिकी तर्जुमान ने ये कहा है कि मार्को रूबियो जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आपसे और इंडियन काउंटर पार्ट से बात करेंगे। इंडिया ने एक ये मजाक बनाया हुआ है कि हर कुछ साल के बाद वो एक फॉल्स फ्लैग करता है और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम शुरू कर देता है। हमारी प्री कंडीशंस क्या होंगी और क्या मीडिएशन पॉसिबल है मौजूदा सूरत हाल में? नहीं ज़रा एक सेकंड, ऑलरेडी उनके 4 सवाल हैं एक ही में, सो मेरा पहले हैंडल कर रहे थे, अभी करते हैं, अभी आपके पास विल कम टू यू। अगर आप कमेंट कर दें, इज देयर एनी अपडेट ऑन द करंट सिचुएशन? देखिए, वी हैव ए नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिक्वेस्ट हमने भी भेजी हुई हैं, हमारे पास भी है, वी आर मैनेजिंग इट एज पर मैक्सिमम पोटेंशियल। लेकिन ये जो आपने सेक्रेटरी रूबियो की बात की, उन्होंने चूँकि मेरा शायद एक ट्रैवल था जो मैंने पोस्टपोन किया, यू ऑल नो, काबुल के बाद मैंने ढाका जाना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मुझे भी भेजी हुई है और गालबन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आई है। तो whosoever is available will talk to him when he calls. Obviously foreign office as per the standard practice will tie up the time. जहाँ तक फॉल्स फ्लैग है, हमने तो इसको अपनी इवन पहलगाम पे सीरियस रिजर्वेशन फ्लैग कर दी है। पहले आपने सब कुछ देखा है जो जनरल शरीफ ने आपको दिखाया है। दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दैट वी डू नॉट बिलीव कि ये है, लेकिन इसके बावजूद वी हैव ऑफर्ड ओके फाइन, इफ हुआ है, यू से दैट इट्स हुआ है, तो प्लीज give the evidence to the neutral independent investigators. What is the problem about not having a probe? So अगर probe होगी तो only then we would know कि where do we stand. तो ये false flag जो है, ये एक इनका ड्रामेटिक किस्म का ये इनका प्लान है। पुलवामा देख लें, मैंने भी आपको मेडलिन ऑलब्राइट की किताब प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट का बताया। I was present 2nd of December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif, and we have dialogue. Madeline Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, अपना मुशाहिद हुसैन सैयद, शहबाज शरीफ साहब and Riaz Khokhar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. These are national history and archives, and they are there where it should be. So let me assure you. We know that there is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first 48 hours has died down already. You have seen that the Indians khud was many things. So this is how the narrative has virtually gone for the six, and their propaganda has fallen. So हम अभी भी हमारी जो ऑफर है वो है, जहाँ तक आपने ममालिक की जिक्र किया, मीडिएशन की बात की। देखिए, मीडिएशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मीडिएशन तो कोई ज़रूरत नहीं है। So our friends have offered and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and the regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are inshallah in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode of our liking. Thank you. I'll just try to add to that आपने कहा information आती है कि जहाज ही हो गया, मुख्तलिफ तरह information, तो अगर तो आप अपनी information social media से ले रहे हैं तो आपको बहुत तरह की information मिलेगी। तो I would request that please only refer to the credible sources of information, especially ये जो circumstances चल रहे हैं इसके अंदर, the social media, the accounts, they are not a credible source of information. वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। अपने दावे की बात की, वो दावा कहते हैं कि जी हमारा राफेल और ये वो, तो उनके दावे तो पहलगाम पे भी हैं, उनके दावे तो बहुत सी चीज़ों पे हैं। उनके अगर हम उनके दावों पे चलना शुरू हो जाएं तो then the world will look entirely different. And lastly, जो आपने DGMO की टॉक की बात की,
there is a long-standing arrangement of routine होती है, DGMO एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश्ड है और वो हर ट्यूसडे को उसके ऊपर एक बातचीत होती है। इसके अंदर जो सा है दोनों साइड्स की प्रोटोकॉल यही है कि वो इस बातचीत को, इस कॉन्टैक्ट को पब्लिक नहीं करते। We don't know that for what reason the Indians thought it's necessary कि उन्होंने आके इसको पब्लिक करना है। Perhaps they felt, जिस तरह उन्होंने कहा कि in the narrative, in the information domain, they have nothing to tell, तो they thought it's कि जी इसको अपनी पब्लिक को बताया जाए कि हमने वहाँ पे ceasefire violations की बात की है और हमने ये बात की है। तो this is not something that is talked in public. So this is an arrangement long standing between the two countries. जी सदीक साजिद जी, एक न्यूज़ है। डॉक्टर साहब, अभी आपने हाल ही में काबुल का विज़िट किया और उसके फौरी बाद ये 71 जो डीजी साहब ने बताया कि टेररिस्ट अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉक्सीज़ की बात की, तो क्या आपकी उनके साथ इस हवाले से जो बात हुई उसका नतीजा इस सूरत में निकला कि शुरू में क्या कहा आपने? काबुल विजिट किया। जी 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 वो तो फिर वही जारी, बल्कि सबसे बड़ी तश्कील जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आई। दूसरा डीजी साहब, जो आपसे एक सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलसल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, और उनका इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी फ़ौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान के ऊपर हमले का, और ये कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से जगह का तयन कर लें, मकाम का तयन कर लें, टारगेट का तयन कर लें। तो हमारी तरफ से जो आपका इसको रिस्पॉन्ड क्या होगा? मैं काबुल का जवाब आपको पहले दे देता हूँ। देखिए, डोंट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स एंड यू हैव टू डील विद देम। दिस इज़ नो सोल्यूशन कि अगर हमें पता है कि उनकी सरजमीन माजी में इस्तेमाल हुई है तो हम अपने तल्लुकात को बंद कर दें। It is not neither good for economy, nor trade, nor even Islamically, it's not allowed. So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, वो नहीं करते, चॉइस साहब जनरली प्रेस टेक आउट नहीं करते, वो प्रेस रिलीज नहीं होती। इट इज़ अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होके हमारे काउंटर पार्ट ने, वी शुड अप्रिशिएट। बजाय ये कि अगर हम ऐसी चीज़ों पे क्रिटिकल होंगे तो जो उसका पॉजिटिविटी है वो इंडिया तो भेजेगा उनको। देखे आपने तो बड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई, मुझे बताया गया वो बहुत थोड़ी मीटिंग करते हैं। इट वॉज एलेबोरेट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर खुद। उसके बाद DPM से मीटिंग हुई, उनकी पूरी कैबिनेट के जितने मेन विंग्स थे वो सारे थे, और फिर मुत्तकी साहब से मीटिंग हुई। तो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हमें देखिए, हमने रहना है एक दूसरे के साथ, और हमारी जो बेहतरी है उनके लिए बेहतरी है, उनकी जो बेहतरी हमारे लिए बेहतरी है। सो गवर्नमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स दे डिसाइडेड कि वी शुड री एंगेज, और उसके नतीजे में मैं गया और द विजिट वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और मैंने यहाँ आके आपको नहीं बताया कि वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे बाएं हाथ मुत्तकी साहब खड़े थे और मैं हर चीज़ जो कुछ हमने अनाउंस किया, जो कुछ एग्री किया, मैंने ट्रांसपेरेंटली कौम को और दुनिया को बता दिया, और उन्होंने भी उसको उसी पैराए में लिया, उसी तरह रिस्पॉन्ड किया। तो पहले अगर हम काबुल को इसमें ड्रैग इन करेंगे, आई थिंक इट विल नॉट बी फेयर। सो इट इज़ नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, वी आर नॉट कंसर्न कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए जो कह रहे हैं। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं, हम पहले भी कमिट, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: we are ready, don't test it. Thank you, sir. Jiang Chao, Xinhua News Agency. We have seen that in the past days, Deputy Prime Minister and Foreign Minister held a phone call with Chinese Foreign Minister Wang Yi, and according to a release from Chinese Foreign Ministry, China reaffirmed its support
to Pakistan on counterterrorism and safeguarding its national interests and national authority and territory, and also support to carry out investigation on the incident in Pahalgam in a fair and objective way. So my question first to DG SPR that one thing when in your presentation about the Chinese national who are being attacked on October the 6th, 2024, that a account on social media to show indicating that this account knows the attack ahead of the thing happen. So have you ever traced the background of this account, who are behind it, and are you planning to present these evidence after the investigation to your Chinese counterparts? This is my first question to DG SPR. So second question that we have already seen yesterday that Indian authority has, especially its leadership, has released a lot of signal on solving the issue by forces. Well, we have seen Pakistan has carried out a lot of intensive diplomatic activity with neighboring countries and major countries in the past days. Has Pakistan have planned to propose a resolution or propose a case in the UNDC to seeking for pass a resolution to limit both sides or India side to carry out the war to solve the issue? This is my second question to Deputy Prime Minister. Thank you. Well, I had, detailed telephone call, long telephone call with His Excellency, the Chinese Foreign Minister on Sunday afternoon. He was traveling, he was at that time, I sent him a message, he was in Central Asian states traveling to Brazil for BRICS meeting. We were very clear, and I am grateful that he supported, I explained to him. He was obviously up to date. So he supported our stance and offer of the independent investigation. He says a very good offer, and he emphasized that it should be accepted and independent investigation should take place. The second, advice, as we are ironclad friends and brothers, was that we must try and exercise restraint in the interest of the regional peace and security. So I assured him that, as I have told even in the Senate of Pakistan, I have also said it publicly, we will not be the first one to take any escalating move. But he obviously fully agreed. So, his advice was that we should avoid, any escalating move and exercise restraint, which we have the policy by the civil and military leadership have already decided that we will not do the first move. So rest I have already clarified. Your question about the Pakistan plan resolution in the UN Security Council, we will consult. As you know that right now we are moving diplomatic way. Obviously I had to cancel my visit to Dhaka under the circumstances, which was scheduled for 28th, 29th. So we are taking care of everything. So if the leadership would decide for moving a resolution, we will look into that. The resolutions in UN Security Council sometime get shooted down by the P5. They have the veto power. So we are one of the 10 non-permanent elected members. So there's a different debate. We can discuss sometime the reforms in the UN Security Council, the multilateral system, which is weakening very rapidly. So it's not the time. But we will obviously, through consultative measures, because we don't want to, present a resolution and it just doesn't get through. Because you have just seen the press statement filed by United Joint States of America. It took 2 days because we had serious reservations on 2 points, and we got it fixed. We got Jammu and Kashmir included. We got TRF, removed. And after that, it was interesting that within the next 48 hours, TRF actually disclaimed
that we have nothing to do with this thing. So thanks God, you know, our argument has been proven and a position what we took is stand vindicated. Thank you. On the question of the X account, first I would like to say that we are extremely, it is a great tragedy, the loss of the valuable lives of our Chinese friends who were victim of externally sponsored and abetted terrorism. As you saw that, as you highlighted the X account that you referred, a forensic of that account tells a lot about that, from where it's being operated, which agencies. So it has clear linkage with India. As I highlighted, that it was activity on Pahalgam incident, amongst the first one to come and start pointing fingers from these accounts on Pakistan, on Islamist terrorism. Beforehand, claims on 𝗖𝗏𝗣𝗥 airbase attack. Beforehand, claims of an attack that something is going to happen in Karachi. Immediate reporting of that unfortunate incident. And then amongst the first one to say, while we were not sure that who these foreigners were, that the Chinese were victim of that incident. So the forensics is there for all to say. Of course, Pakistan and China share a very organized and institutionalized method of information sharing in the domains of these investigations. So all the relevant information, investigations are shared with the friends. जी सर, मैं सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से खिताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका मुंतखब ऐवान के तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर हमने इत्तेफाक में क्यों नहीं किया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये नहीं बताया जाता कि कौम इस मसले पर इकट्ठी है, हुकूमत के पीछे खड़ी है। Political statement well taken. Let me answer. देखें भाई, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो शायद आपको मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आफ्टर अराइवल फ्रॉम Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout, and very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His statement after that, the National Security Committee's press release, and after that series of interactions by Prime Minister. I'm amazed कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है। या तो आपको मौका नहीं मिला या आप कहीं और इंडियन चैनल्स ही देखते रहे हैं इस दौरान। दूसरा जो तो इसलिए गायब को तो he is leading from the front. I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And आपने देखा कि हम लगे हुए हैं, and I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. दूसरी जो आपने फरमाया कि 15-20 महले, अगेन आपकी, मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, आप शायद नॉन अकाउंटेंट हैं, ये 15-20 तो मुझे नजर नहीं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी। कम से कम तमाम पार्टीज़ के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इफ़ यू रिकॉल, अगर आप मौजूद थे तो हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। हमने 24 की रात को ही एक ड्राफ्ट, तो इसे स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस है कि ये फॉरेन ऑफिस का काम होता है, हमने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के वो 11 बजे रात को दे दी। मैं अब चूँकि आपने सवाल किया तो मैं इसी तफसील शेयर कर रहा हूँ।
तमाम को दे दी। अगले दिन सेनेट इजलास से 1 घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी और मैं खुद उसमें हाजिर हुआ और उसमें हमने खुले दिल के साथ जो किसी ने वैल्यू एडिशन प्रपोज की वी टुक इट। और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, यू नेम जो उधर नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वर, और कहाँ बैठे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे जहाँ मैं कभी होता था, अभी मैं लीडर ऑफ द हाउस में बैठता हूँ, तो हम वहाँ बैठे जहाँ शिबली फराज साहब का ऑफिशियल चैम्बर है। तमाम ये कोई ईगो का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये एक नेशनल इशू थी। मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि वो लीडर दी अपोजिशन के कमरे बैठे हैं, उनको बुलाएं। मैं कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा। हम सब बैठे खुल के 2 घंटे, अगर आपको याद हो तो इजलास लेट शुरू हुआ। सो विद द कंसेंसस ऑफ दी ऑल पार्टीज, तो ये ना प्लीज कहें दिस विल बी ए वेरी अनफेयर स्टेटमेंट कि जी 15-20 सेनेटर्स के मौजूदगी में अगर रेजोल्यूशन पास होगी। आई वॉक देम थ्रू पूरी जो उस वक्त तक की कार्रवाई थी सबको हाउस में, जब मैंने रेजोल्यूशन पास की। एक तरफ मेरे दस्तखत है, दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन का दस्तखत है उस रेजोल्यूशन के ऊपर। यू कैन गो एंड गेट द कॉपी। और उसके बाद कल 2-3 दिन डिबेट हुई। कल जब डिबेट को मैंने कंक्लूड किया, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल यस्टरडे इवनिंग, जब वो प्रोरोग हुआ उससे पहले, मैंने जो मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं इस मामले के हवाले से, आई जस्ट अगेन शेयर्ड एंड आई टोल्ड देम कि जब भी इजलास दोबारा आएगा मैं आपको बाकी भी मजीद जो कहा हो। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है भाई। और सेनेट बिल्कुल ही कौम कटी है। अब हम ऐसे मैसेजेस ना दें। देखिए, इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो होते हैं, इट इज़ आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स टू डील विद द डिफरेंसेस, और डील करते रहे को। मैं तो पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैं पिछले 35 साल से यही जक मार रहा हूँ। तो आई विल कंटिन्यू टू डू दैट प्लीज़। डार और DGISPR गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम और इदारे एक साथ हैं। दहशतगर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। भारतीय हुकूमत की तरफ से मजमूम सियासी मकासद के लिए ऐसे वाक़यात का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय क़यादत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करती है। मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक को कुचलने के लिए भारत ने काले कवानीन का सहारा लिया। पूरा खिता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की वजह से खतरे में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का भारत अहम स्पॉन्सर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कौम और इदारों का अज़्म गैर मुतसलसल है। पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाने वालों को भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है। भारत में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की वजह अंदरूनी अवामिल हैं। DGISPR ने कहा कि भारत अंदरूनी वसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इल्ज़ामात की बजाय हम पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि पहलगाम वाक़े की जगह LOC से 230 किलोमीटर तक दूर है। वाक़े के फौरी बाद FIR के इंदराज और मंदरजात ने सवाल उठा दिए हैं। पहलगाम वाक़े को फौरी तौर पर मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया। DGISPR ने कहा कि भारतीय मीडिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। पहलगाम वाक़े पर इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स जाफर एक्सप्रेस हमले में भी इस्तेमाल हुए। इल्ज़ाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी भारतीय इल्ज़ाम तराशी का भांडा फोड़ दिया। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा रहा है। छठी सिंहपुरा और पुलवामा वाक़यात को भी भारत ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सबोताज करना चाहता है। भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार देकर जाली मुकाबलों में निशाना बनाया जा सकता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। DGISPR का कहना था कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। मुस्तनद मालूमात हैं कि भारत ने अपने आलाकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुतहरिक कर दिए। अफवाज पाकिस्तान और खुफिया एजेंसियां तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का भारत अहम स्पॉन्सर है।
दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कौम और इदारों का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाने वालों को भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की वजह अंदरूनी अवामिल है। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। राना शहजादुस्सलाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम ने ज्वाइन किया है। राना शहजाद, जरा शेयर कीजिएगा, बड़ी